Okay, hello everyone. Now today we are going to start with the numericals from changing phases, and two numericals I am selected. I think these are the difficult one from the chapter. So it is question number 7 and question number 6. Let me tell you the question first. In question number 7 we are having the ice 40 grams. 40 gram ice है, तो ice means that the temperature of the ice is 0 degrees Celsius. We are mixing this ice with water. The temperature of the water, the initial temperature of the water is 50 degrees Celsius. इनिशियल टेम्परेचर कितना है वाटर का 50 डिग्री सेल्सियस है. तो जब हम लोगों ने इसमें आइस मेल्ट डाला तो दैट मीन्स टेम्परेचर विल चेंज एंड that final temperature of the water, or we can say the final temperature of the mixture will become T degree. मीन्स कि आइस डालने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर हुआ हमारा कितना हो गया है वो इट इज T डिग्री. सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस T, जो फाइनल टेम्परेचर वो हम लोगों को निकालना है. So let us first of all, by the principle of calorimetry, let us find out the heat loss and heat gain. So heat gain, obviously this ice will gain heat. So how the process take place, let us draw it first. हमारे पास क्या है, ice है. Okay, ice at 0 degree Celsius है. 0 degree Celsius is first of all it goes to water. 0 डिग्री वाटर पे जाएगी. 0 डिग्री वाटर के बाद दिस वाटर विल गोज टू T डिग्री वाटर. उसके बाद इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा वाटर का T डिग्री. इन दिस वे द प्रोसेस विल हैपन. सो यहाँ पे स्टेट इज चेंजिंग. सो हियर वी हैव टू यूज Q1 इक्वल्स टू ml एंड हियर वी हैव टू यूज Q2 इक्वल्स टू mc del T. सो द टोटल हीट दैट इज Q, और वी कैन सी द Q dash will be equals to how much? It will equals to Q1 plus Q2. So Q dash equals to Q1 is how much? Q1 means K M into L plus, and Q2 will be MC del T. So now write down the values of these things. So we have Q dash equals to ml. ml means the mass is 40 grams. It is given to us. And what is the value of L? The value of L is how much? The value of latent heat of fusion of ice is given to us. It is 2.1, I think. It is latent heat of fusion of ice. Latent heat of fusion of ice is 336 into 10 to the power 3. It is 336 into 10 की power 3. So this is given to us, and then it is given to us, latent heat of fusion of ice is given to us, and again we have M is how much? It is 40. What is the value of C? It is 4200 into del T. What is the value of del T? The del T will be how much? Del T means के 0 degree water, T degree water पे, तो that means T minus 0 gives me T only. So now we have to multiply them. So on multiplying them we are getting 1 3 4 4 6 are 24, and say the point 3 4 24 24 go to 12 3 4. Let us write it first in the simple way. 4 6 are 24 24 का 4, 2 carry 12 13 14 14 का 4, 1 carry 4 3 are 12 plus 1 13, and 1 0 into 10 की power 3 plus from here 2 4 to the 8. It is 8 4 to the 8, and how much? It is 0 4 to the 8, and 4 4 to the 16 1 6 8, and how many 0 1 2 3 into how much? Into T. So this we are getting. So after this what we have to do? We have to solve it in a simple way. इसको simple तरीके से solve कर लो. तो on solving this I am writing it 4.4 into 10 की power 5 ऐसे करके लिख सकते हैं इसको. Similarly इसको भी 1 6 1 2 3 4 5 1.68 into 10 की power 5 से. Okay, so this is the value of Q dash, or we can say this is the value of the heat gain. Now we have to find the heat loss. अब heat loss निकालते हैं. So this is what? This is heat gain. ये क्या है आपका? Heat gain. Already written. Now heat loss. Heat loss निकालते हैं, तो heat should be lost
बाय द वाटर इटसेल्फ. वाटर का टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री है. सो वी नो दैट Q, से let's take it Q dash, Q equals to MC del T, and then M means how much? It is 200 grams. So we have taken 200 grams. What is the value of C? The C is 4200. What about this del T? The value of del T will be temperature. Initial temperature is 50 से T डिग्री जाएगा, so that means loss in temperature will be 50 minus T. So this will be the loss in temperature. Solve कर लो इसको. It will be 8 4 1 2 3 4 1 2 3 4 and into 50 minus T. So solve करके ठीक से लिखो इसको. 8.4 into 10 की power 5 and 50 minus T. So अब क्या करना है, हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज करना है. सो वी हैव हीट गेन equals to heat loss. So heat gain is how much? This is the heat gain. So it will be 134.4 into 10 की power 5, 134.4 into 10 की power 5 we are having, and plus 1.68 into 10 की power 5 we are having, equals to heat loss. Heat loss is 8.4 into 10 की power 5 and 50 minus T. So this we are getting. अब इसको solve करना है, तो solve कैसे करेंगे? First of all, this 10 की power 5, this 10 की power 5 and this 10 की power 5 will get cancelled. Common लेके cancel कर देंगे इसको. So we get 134.4 and plus 1.68 T. 1.68 T equals to 8.4 and into 50 minus T. So फिर से सॉल्व करना पड़ेगा. So ये तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा. इसको सॉल्व करते हैं. 134 प्लस 1.68 T equals to 5 8 जा, तो 5 4 जा 20 का 0 2 कैरी 40 प्लस 42 एक 0 पॉइंट आफ्टर 1 प्लेस माइनस 8.4 T. अब शिफ्टिंग करनी है, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं. सो वी गेट 1.68 T प्लस 8.4 T equals to 420 and minus 134.4. So इनको सॉल्व करेंगे तो on solving this we get 10.08 T equals to, and solving this we get 285.6. So T from here equals to 285.6 upon 10.08. So T equals to 28.33 degrees Celsius. So this is the answer. This is the final temperature of the mixture. ये क्या आएगा? It will be the final temperature of the mixture. Okay. Now, in the same way, question number 6. In the same way, question number 6. Let us see question number 6 क्या है. So question number 6 में again it is a simple, the difficult question नहीं है, बस simply process को समझना है. So we are having a ice 10 grams ice तुम्हारे पास है. We are having 10 grams ice minus 10 डिग्री पे. So let us find out the heat gain first. Heat gain कौन करेगा इसमें? Heat gain obviously ice करेगी. So ice है किस पे? It is minus 10 डिग्री पे है. So temperature is minus 10. माइनस 10 से जाएगी ये आइस 0 डिग्री पे, फिर 0 डिग्री आइस से जाएगी 0 डिग्री H2O पे, फिर 0 डिग्री H2O से जाएगी बस 0 डिग्री, क्योंकि मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा. तो 0 डिग्री आइस इससे इधर और यहां से 0 डिग्री वाटर पे. 0 डिग्री क्योंकि जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? इट विल बी 0 डिग्री. सो
this is the heat gain. कौन gain कर रहा है? The heat gain is by the ice. Now let us see, यहाँ पे change नहीं हो रहा है, तो here we use Q1 equals to mc del T and here Q equals to ml. ओके, -10 डिग्री से सबसे पहले 0 डिग्री आइस में जाएगा, फिर 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर में जाएगी. सो लेट अस सी. एंड यहां पे एक हमने assumption लिया है कि लेट m ग्राम ऑफ आइस मेल्ट. पूरी आइस मेल्ट नहीं हुई है, सिर्फ m ग्राम आइस मेल्ट हुई है. सो let us find out the value. heat gain निकालते हैं. so we get Q1 equals to mc del T. What is the value of m? The m is 10 grams. And what is the value of c? The c will be 2.1. And what about this del T? So del T will be 10 itself. So solve off करके 210 we are getting. Q2 को निकालते हैं. Q2 will be ml. ml means के m gram ice melt हुई है and latent heat of fusion of ice will be 336. So we get 336 m. So total heat means Q dash will be 210 plus 336 m. Now this is what? This is heat gain. इतना क्या हो गया ये? heat gain हुआ. Now we have to calculate the heat loss. So heat loss निकालते हैं. heat loss is simply by this water. So water क्या कर रहा है? water is at water का टेम्परेचर कितना है? the temperature of the water is 10 grams है. टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो it goes to 0 डिग्री. so Q equals to Q double dash Q equals to mc del T. The mass of the water is 10 grams. The specific heat capacity is 4.2. I think the specific heat capacity of water is 4.2. so put here 4.2 and change in temperature will be 10 only. so this will be 420 joules. Now by the principle of calorimetry, heat gain equals to heat loss. so Q dash equals to Q double dash. solve out किया इसको. 210 plus 336 m equals to 420. इसको शिफ्ट किया इधर. so 336 m equals to 420 minus 210. so 336 m equals to how much? 210. so we get m equals to 210 upon 336. तो इसको सॉल्व किया. so we get 0.625 gram of ice will melt. okay, इतनी आइस क्या करेगी? मेल्ट करेगी. so this is all for today. बाकी the few questions are left, just try them. नहीं आएंगे तो मंडे को let me do 2-3 questions more. so for today, thank you very much.